Hello friends, how are you? So I'm back with new topic that is sex determination. It is very interesting topic and you will learn many unique things here. So, how sex can be determined in an individual we will learn here, and you will see that different type of individual will determine their sex in a different way. We have discussed the idea that the two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. Okay, so in class 8 also you have done this topic a little bit, that male and female characteristics. Okay, secondary sexual characters also we have done. So male, they are having many different characteristics and female are having different characteristics. So how is the sex of a newborn individual determined? What is in the newborn baby which will determine the sex of an individual? So the basic root we will discuss here. Okay, so different species use very different strategies for this. So as I told you that all are not same, all are different, so different species will determine their sex in a different way. Some rely entirely on environmental cues. Thus, in some animals, temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the animal developing in the eggs will be male or female. So, all of you know that animals are of different types. Some are oviparous, some are viviparous. Okay, some animals will lay egg, they will lay fertilized egg, mean fertilization is taking place inside their body and they will lay fertilized egg. Okay, after then they need to incubate. Okay, you must have seen different type of birds. Okay, they used to sit on their fertilized egg. Okay, so it is to incubate, to give proper temperature to an egg. Okay, otherwise egg will not hatch. Okay, so in other animals such as snails, individuals can change sex, indicating that sex is not genetically determined. So, in such animals, gene is not responsible for sex determination. In such animals, temperature is important. Okay, so they are different from human being, because we will learn here that in human beings, chromosomes, genetic materials are responsible for the sex determination. Here I will take one example of turtle. If turtle eggs incubate below 81.86 Fahrenheit, the turtle hatchling will be male. If the egg incubate above 87.8 degree Fahrenheit, however, the hatchling will be female. So you see the difference. Here temperature is more important. Okay, but in detail we are going to discuss in case of human beings. So you can check out here that however in human beings, sex of individual is largely genetically determined. Okay, so it is very important to note down that in case of human beings, sex is determined genetically. In other words, genes, okay, genes inherited from one parent decide whether we will be boy or a girl. But so far we have assumed that similar gene set are inherited from both parents. If that is the case, how can genetic inheritance determine? We will discuss here. So my dear students, we have learned that in human beings 23 pairs of chromosomes are present. Out of these 23 pairs, 22 pairs are autosomes. Okay, and one pair is sex chromosome. So here we will stress on this pair. Okay, so male is also having one pair of sex chromosome, female is also having a one pair of sex chromosome. So now here we will concentrate on only sex chromosome. We will not talk about 22 autosomes. Okay, we will not talk about them. We will talk about only sex chromosomes. So you can see here in all the cells of our body, okay,
one pair of sex chromosome is present. Okay, so XY is they are the chromosomes which are present in male, XX is present in case of the female. Okay, and when gametes are formed, okay, gametes in case of male are known as a sperm, and gamete in case of female, they are known as a ovum. Ovum is singular, ova is plural. Okay, so when gametes are formed, okay, you see sperms, when sperms are formed, only one sex chromosome out of a pair will enter into gamete. As all of you know that gametes, they are haploid in nature, they are having a half number of chromosomes. So इसमें भी एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाएगा, एक क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में जाएगा. Okay, so we can say that sperms are of two type. Okay, sperms, they are of two type. One sperm is having X chromosome and one sperm is having Y chromosomes. Okay, but ovum is having only one type of chromosome because females are having XX chromosomes. Okay, both are same. So now we will go in detail. So here you can see sperms, they are of two type, ovum is of only one type. So when fertilization will take place, then what will happen? This X can combine with this X. Okay, so we will get this combination. And if this type of chromosome will fertilize this egg, then we will get this type of genetic setup. So here you see, if this combination, this is a zygote. Okay, if zygote is having this combination, child will be a girl. Okay, and if zygote is having this combination, then child will be male. So here you can see that in our case, in human being, sex is determined by the chromosome, type of chromosome. Okay, and in detail if we will go, then genes which are present on the chromosome are responsible for the sex of an individual. So now I will read from NCERT book. The explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a maternal and paternal copy, and we have 22 such pairs. But one pair called sex chromosome is odd, is not always being a perfect pair. Okay, women, they have a perfect pair, because in case of women you will see chromosomes both are of same type X. Okay, they are of same shape and same size. But if we see in case of men, it is mismatched pair. Okay, one is X, one is Y. So in which one is a normal sized X and other is short one. Okay, this is important point to note, that Y chromosome is shorter than X chromosome. So women are XX, men are XY. Now can we work out what the inheritance pattern of XY will be? Okay, so we have seen here, if X will combine with X, the baby will be girl. If Y will combine with X, baby will be a boy. So it is the genetic material which will decide the sex of an individual. As figure 9.6 shows, half the children will be boys and half will be girl. So it will depend on the genotype, on the genetic material of the sperm, that which type of sperm is responsible to fertilize an egg. All children will inherit an X chromosome from their mother, regardless of whether they are boys or girls. The sex of the children will be determined what they inherit from their father. Okay, so it will depend on the type of the sperm. Okay, it will depend on the sperm, type of the sperm which will fertilize an egg, the sex of an
child. A child who inherits X chromosome from her father will be a girl. One who inherits Y chromosome from him will be a boy. Okay, so sex is determined by the type of the chromosome. So, my dear students, I hope this concept is clear to you. Okay, now we will discuss some NCERT questions next to this topic. 4 questions are there. So, now I will share my PPT with you and we will discuss some NCERT questions. So the first question is on page number 147. Okay, these questions are on page number 147. You can just check it out. How do Mendel's experiments show that trait may be dominant or recessive? Okay, so we have done it earlier also, that is law of dominance. Okay, law of dominance में हमने देखा था okay कि only one trait will express. Okay, so the trait which will express itself will be a dominant. Okay, so here in this question you have to explain the law of dominance, or you can say principle of dominance. Okay, both are same. So, according to Mendel's principle of dominance, when two dissimilar factor, so you see at the time of Mendel उस वक्त हम ये term genes और alleles use नहीं करते थे, ठीक है, उस टाइम सिर्फ सब लोग फैक्टर्स ही जानते थे, तो इसलिए आप ये वाला वर्ड जो है फैक्टर कई जगह देखेंगे तो इट मीन जेनेटिक मटेरियल ओनली. उस वक्त कुछ भी ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं था कि जीन क्या होता है और अलील क्या होता है, सिर्फ सब लोग फैक्टर ही जानते थे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मेंडल प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस व्हेन टू डिसिमिलर फैक्टर्स, इफ आई टेक दिस एग्जांपल, okay, these two factors, okay, they are present in an organism, only one will express itself. The factor which express is called dominant factor and the one which unexpressed called recessive factor. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फैक्टर क्या होता है. मेंडल के टाइम यू सी जब रिसर्च होती जाती है तो नई नई चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है, तो मेंडल ने इसको नाम दिया था फैक्टर. ओके, उसके बाद और रिसर्च हुई और डीप में जीन्स नाम आया सामने, फिर उसके बाद अलील्स आए. ओके, so we can use this word factor for allele or genes. Okay, the after then, for example, okay, with the help of an example we will explain. You can make a cross also. Okay, you can make a cross also in this question which we have done in law of dominance. Okay, so for example, when a tall plant was cross pollinated with dwarf plant, first generation formed all will be tall. Okay, this genotype we will get. Okay, this is the genotype, genetic setup. Okay, this is the phenotype, mean physical appearance. Okay, which we can see. It shows that tallness is a dominant trait. You see, if we check the genotype, small t is also there. Okay, small t भी है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि उसके साथ एक डोमिनेंट फैक्टर प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट जो फैक्टर है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा. ओके, सो इन अ पॉइंट you have to write down these answers. Okay, you can do correction here. It is written 1, so make it 2, make it 3 and make it 4. So 4 points are there. Okay, so you can note down these answers in your notebook also. Okay, and practice, write it 2-3 times in your notebook. Now our next question is regarding law of independent assortment. Okay, तो अगर law of independent assortment वो पूछते हैं तो यही सेम आंसर आपको लिखना है जो इसमें है. ठीक है, so first you will give the definition, then with the example you will explain and you have to make the cross also. Okay, so as we have discussed, see the first point which you will give is, according to Mendel's principle of independent assortment, alleles of different characters separate independent from each other during gamete formation. जब gametes बनेंगे, जैसे this is the genotype. Okay, जब gametes बनेंगे तो ये जो alleles हैं ये एक दूसरे से segregate कर जाएंगे independently. For example, अब एग्जाम्पल की हेल्प से I will explain.
For example, when the plant having round and yellow seed are crossed with plant with wrinkled and green seed, all four traits are independently inherited. So you can see here in this cross also you can make this Punnett square. Okay, so you see, whenever you are writing, okay, write properly, write P generation, P generation, P for parent. दिस इज पेरेंट जनरेशन. पेरेंट जनरेशन इज ऑलवेज प्योर, ये हमेशा प्योर होती है. प्योर का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ही कैपिटल आर है. ऐसा नहीं है कि एक अलील ऐसा है और एक रिसेसिव है, ये हाइब्रिड हो जाएगा. ठीक है, ये प्योर है. अब यहाँ देखेंगे ये भी प्योर है, दोनों कैपिटल वाई है. अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा तो ये हाइब्रिड हो जाएगा. ठीक है, ये भी प्योर है. तो पेरेंट जब भी मेंडल ने लिया, मेंडल ने पेरेंट हमेशा प्योर लिया. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे आपने गैमीट लिखना है. जो गैमीट में क्या होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, एक आर आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा. ठीक है, और फिर हमको मिलेगी F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में क्या होगा, ये दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे. अब हमें चार कम्बिनेशन एक जैसी मिल रही हैं, तो चारों बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बनाओ. ओके, अदरवाइज आपका जो ये डायग्राम है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, सो वी विल गेट दिस वन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो ये क्या है, ये हाइब्रिड है, ये प्योर ब्रीड नहीं है, ये एक हाइब्रिड है. एक अलील डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है. तो ये सभी के सभी क्या है, राउंड और येलो. अगर आप इसका जीनोटाइप देखो और इसका जीनोटाइप देखो, देखो दोनों का फिनोटाइप क्या है, राउंड और येलो. लेकिन जब जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप डिफरेंट है, ये प्योर है और ये हाइब्रिड है. ठीक है, तो जीनोटाइप अगर आपको लिखने को बोलेंगे तो आपको इस तरीके से अलील रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे. दिस इज द जीनोटाइप ओके ऑफ दिस प्लांट ऑफ द पेरेंट, एंड दिस इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन. ऑल आर सेम. ओके, और F1 जनरेशन के बाद हमें क्या करना है, दो इंडिविजुअल F1 जनरेशन से लेने हैं. मेल फीमेल दोनों हमने कहाँ से लेने हैं, F1 जनरेशन से लेना है. तो ये हमें F1 जनरेशन मिला था. ठीक है, F1 जनरेशन इसको हमने क्या करना है, मेल भी इसी का होगा और फीमेल भी इसी का होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन इसमें नहीं होगा, इसमें सेल्फिंग होगी, सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम गैमीट्स शो कर रहे हैं फीमेल के, यहाँ पे हम गैमीट्स शो कर रहे हैं मेल की. ओके, इसमें तो जो क्रॉस इन्होंने बनाया है ये टिल्टेड है, अदरवाइज यू कैन मेक अ स्ट्रेट बॉक्स ऑल्सो. ऐसे पुनिट स्क्वायर हम स्ट्रेट भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे टिल्टेड ही बनाना है, कैसे भी बना सकते हो. लेकिन एक तरफ यहाँ पे मेल गैमिट शो करो, यहाँ पे फीमेल गैमिट शो करो. ओके, जैसे यहाँ पे शो किया. जैसे जब हम इसके अंदर बॉक्सेस के अंदर कम्बिनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक हमने यहाँ से लिया, एक हमने यहाँ से लिया, हमें क्या मिल गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ओके, तो ये क्या हो गया, राउंड और येलो. और इस बॉक्स में हमने यहाँ से लिया और यहाँ से दोनों को कंबाइन कर दिया, ये दोनों गैमिट यहाँ कंबाइन हो गए. इस बॉक्स में हमने यहाँ से एक गैमिट का पॉसिबिलिटी लिया और एक यहाँ से, तो ये हमें मिला. तो इस तरीके से यू कैन प्रैक्टिस बाय ओन. ओके, हमने डिफरेंट टाइप के हमें प्लांट्स मिलेंगे. ठीक है, एंड व्हेन वी विल चेक their phenotype. Okay, when we check the phenotype, what type of phenotype we will get, we will get 9:3:3:1. so जब आप लिखते हो साथ में मेंशन करो कि 9 क्या है, राउंड और येलो है, 3 राउंड और ग्रीन है, 3 रिंकल्ड और येलो है, 1 रिंकल्ड और ग्रीन है. ठीक है, रिसेसिव, तो रिसेसिव जो है वो हमें एक ही मिल रहा है. ठीक है, क्योंकि रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो अकेला प्रेजेंट है. इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इट विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. ओके, सो ऑलवेज मेक क्रॉस एटलीस्ट फॉर 2-3 mark क्वेश्चन, मेक इट. ओके, फॉर 1 mark you simply define it. Fine. After then, next third question on same page, a man with blood group A marries a woman with blood group
O. Their daughter, now you see whenever such question comes, you just imagine the genotype. Okay, man is having blood group A. ब्लड ग्रुप ए जो होता है वो डोमिनेंट होता है, तो इसका जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है और इसका जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है. दो पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट है इसलिए यहाँ ओ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका जीनोटाइप ऐसा ही होगा और कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. इज दिस इन्फो, अब नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद women with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you what of the trait blood group A or O is dominant? अगर आपको सिंपली बता दिया जाए कि फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो डॉटर का ब्लड ग्रुप O होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमको फादर का और मदर का जीनोटाइप तो पता ही नहीं है. मैन का जीनोटाइप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना. तो हमें जीनोटाइप पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ होगा कि नहीं होगा, है ना. तो नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन वेदर डोमिनेंट ट्रेट, जो डोमिनेंट ट्रेट आर ब्लड ग्रुप ए और ओ, कि डोमिनेंट ट्रेट ए है कि ओ है, ये इसमें से हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें जीनोटाइप बताया ही नहीं गया है. ठीक है, अगर फादर होमोजाइगस है, होमोजाइगस सिचुएशन क्या हुई, ये वाली जिसमें दोनों ही अलील सेम है. अगर होमोजाइगस सिचुएशन होती है तो जितने भी इंडिविजुअल, मान लो अब यहाँ पे मैं एक क्रॉस बना देती हूँ, ये मैन है और ओ का ब्लड ग्रुप जो है जीनोटाइप तो सेम ही रहने वाला है. ठीक है, तो इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएंगी वो सेम ही होंगी, सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए. ओके, देन ऑल द इंडिविजुअल जो होंगे वो ए होंगे, ओ हो ही नहीं सकते. अगर फादर हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस का मतलब अगर फादर का जीनोटाइप ए ओ है और मदर का जीनोटाइप तो हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारे पास चांसेस होंगे कि 50% जो है वो हेटेरोजाइगस होंगे फॉर ब्लड ग्रुप ए और 50% जो होंगे उनका ब्लड ग्रुप ओ होगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें जीनोटाइप पता होगा तभी हम बता सकते हैं कि ए डोमिनेंट है कि ओ डोमिनेंट है. ओके, तो जीनोटाइप पता होगा तभी हम बता सकते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर नो. सो सी, दिस क्वेश्चन इज हैविंग टू पार्ट्स. ओके, और आपको रीजन भी देना है ऐसा क्यों. सो हियर ऑल्सो यू कैन यूज अ क्रॉस. ओके, आप यहाँ क्रॉस भी बना सकते हैं या ऐसे ब्रैकेट में जीनोटाइप लिख के यू कैन जस्ट गिव एन आइडिया. ओके, एंड यूज दीज टर्म्स. होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम, अलील सेम है. हेटेरोजाइगस मीन अलील यहाँ पे डिफरेंट है. ओके, सो दिस वे ऑल्सो यू कैन गिव द आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो अभी हमने डिस्कस किया. ठीक है, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बीइंग. इसमें वो सेम क्रॉस आप बना सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था. ठीक है, आई विल शो यू NCERT बुक लेटर ऑन. सो सी, for point wise you have to mention here that human beings, they have 23 pair of chromosome, out of which 22 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosome. Women, they have a perfect pair of sex chromosome, both called X. females में दोनों same होते हैं sex chromosome. ठीक है, लेकिन बट मेन दे हैव मिसमैच्ड पेयर. उनके पेयर में क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है, वाई एक्स से छोटा होता है. ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट, जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो एक्स क्रोमोसोम उनको मदर से ही मिलेगा, क्योंकि जो एग है वो हमेशा सेम टाइप का होगा, लेकिन स्पर्म जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. Sex of the child will be determined what they inherit from their father. A child who inherit X chromosome from father will be a girl, and one who inherit a Y chromosome from him will be a boy. Okay, so you can show, you can give that cross also. I will show you how to make a cross. So when you have to make a cross, you simply write X X. Okay,
you can write XX male, okay, and cross with XY female. Okay, these are the parents, okay, male and female. Now you will show gamete. Okay, you will show gamete. Gamete are of two type. It can be sperm can be X and sperm can be Y. So like this you can show. Okay, no need to make the picture of male and female here. Simply you write the genotype. और जो egg होंगे वो सभी same type के होंगे. ओके, सो यहाँ आपको मेंशन करना है कि आप गैमीट बना रहे हैं, फिर आपको मेंशन करना है कि आप जाइगोट बना रहे हैं. ठीक है, तो जाइगोट जो है अगर एक्स स्पर्म फ्यूज़ करेगा एग के साथ तो इसका जो जाइगोट होगा उसका जीनोटाइप एक्स एक्स होगा, और अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को तो इसका जीनोटाइप एक्स वाई होगा. ठीक है, फिर आप यहाँ पे मेंशन करें ऑफस्प्रिंग्स. ओके, ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? अगर ये जीनोटाइप होगा तो ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा, अगर ये जीनोटाइप होगा तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? मेल होगा. लाइक दिस वे यू कैन मेक अ क्रॉस. ओके, नो नीड टू मेक द पिक्चर एंड ऑलवेज गिव द हेडिंग ऑल्सो. ओके, एट द टॉप हियर you just write, okay, at the top you write sex determination in human being. Fine. So with this, our today's topic is complete. We have done sex determination and some NCERT questions. Okay, so in next class, we will discuss some important points of evolution also. Otherwise, evolution is deleted. Okay, I will show you the NCERT book here. So see student, this evolution portion is deleted, okay, but I have seen some question related to these topics. Okay, so we will cover these topics in next class up to this acquired and inherited trait also we will discuss, but no need to do Darwin work. Okay, this block no need to do. Okay, this we will not do. Okay, these questions we will discuss and speciation we will discuss. Okay, so up to this only. Okay, up to this we will discuss. Okay, this is little bit extra only, but why to take chance? Okay, but we will not discuss this one. Okay, this one we will not discuss. There is no chance that it will come. Up to this we will cover. So in next video I will cover this portion of evolution which I feel that it can come, possibility is there. Okay, so in next class we will start. Okay, so bye everyone, take care and read NCERT book regularly and practice all the questions. All the best.